तुम इतने अच्छे हो that you don't need the degree. कंपनी तुम्हारे पास आएगी. Have that kind of mindset. Just think about the scenario. So you are a tech founder. You find a person who is like very good at what they do. So obviously you would want to hire the right people. दिस इज विकास और वेलकम बैक टू माय चैनल बीसीएस लाइफ। आज हम जा रहे हैं मीटअप में, कुणाल भैया के मीटअप में, टेक बाइट। तो फर्स्टली वहाँ में जाना होगा नोएडा, तो अभी हम कश्मीरी गेट हैं और मेरा एक फ्रेंड भी आया हुआ है पुणे। होता है टॉप के एलिमेंट्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये मेरे को कैसे पता है? सोर्स होने के क्वेश्चन में पैटर्न दिख रहे हैं। आपको क्वेश्चन देगा मेरे को रैंडम में टॉप के एलिमेंट, मर्ज के लिस्ट्स, ऐसे टॉप के एलिमेंट में पता ही करेगा इसमें, राइट? कोई ऐसा दे रहा है कि 1 to n नंबर्स है, मुझे लग रहा है साइक्लिक सॉर्ट लगेगा। कोई दे रहा है कि सॉर्टेड एलिमेंट बाइनरी सर्च कर जाएगा, सॉर्टेड एलिमेंट। then there's one called सबसेट वाले सब सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम 2.25 स्टैटिक 2.5। तो ये प्रैक्टिस करने से आता है। इफ यू जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस रैंडमली, मतलब एनालाइज नहीं कर रहे, ये बस सॉल्व हो जाए, देन इट्स नॉट वर्थ इट। तो इसलिए आई वुड रेकमेंड, मतलब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन करने हैं, जस्ट ट्राई टू फाइंड कि इस क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न यूज हो रहा है। दैट कोडिंग इट वाज बहुत आसान, तो कुछ होने का नहीं आता। Recent days and very few of or none of them were asking DSA in those technical rounds. Mostly they were focused on development or those side of stuff. So if we talk about remote, like all my companies were in India itself. So if I talk about remote, what's the current trend? Remote में तो नहीं पूछते DSA। DSA क्यों पूछती है टेक कंपनीज? बिकॉज़ दे हैव टू फिल्टर आउट पीपल। अब when Google posts की Google ने जॉब खोली है, you know 100,000 people will apply, and 1 लाख एप्लीकेशन ऐसे आ जाते हैं। बट जो स्टार्टअप्स, उनके पास नहीं आते ऐसे अमाउंट, तुम्हें ढूंढ नहीं सकते हैं इसका। तो दे आस्क यू इन देयर ओन एरिया, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस के बारे में। समटाइम्स आई हैव सीन कि इफ योर प्रोफाइल इज वेरी गुड, दे विल नॉट आस्क यू DSA, दे विल आस्क यू योर एक्सपीरियंस ओनली। सेकंड ईयर में आई हैड इंटरव्यू एट हैकरन, उन्होंने मुझसे क्यूबरनेटिस पूछा एंड रेड हैट normally. So I think it depends on the situation. But having said that, it's not the way any days in England. Because if you end up working at applying to Google and Microsoft, so it's a very good, choice for the career. So I went to apply and they recently got funding. So वो ऐसे बड़े-बड़े events sponsor करती है. That's how you can find startups who are like उनके पैसा है। कौन सी टेक्निक पे सबसे ज़्यादा हो रहा है? हाँ? कौन सी टेक्निक जो है, मतलब टेक स्टैक कौन सी ऐसी सबसे ज़्यादा? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड में इट्स बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड, डिमांड में है। दिस वेब डेव एंड डेवऑप्स है, मतलब कुछ भी मर्जी मालूम। लाइक आपने डायरेक्ट में जेबॉस कैसे फाइंड आउट करा? मैं जावा के प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था, तो दैट्स हाउ आई फाउंड जेबॉस, जीसॉफ्ट की वेबसाइट पे। तो आप फर्स्ट इशू कैसे सॉल्व करना? फर्स्ट इशू मेरा कुछ था नहीं। फर्स्ट इशू था डिलीट अ फाइल, ना कोड लिखना है, ना कोड हटाना है।
फाइल डिलीट साथ डिलीट अभी मेरे मीटअप पे जाओगे पब्लिक है ऑब्वियसली मेरा पहले कंटेंट में जाओगे जस्ट डिलीट करना है उसके बाद फिर सम ग्रामर रीडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड ऐड सम कोड एग्जांपल्स एंड टेस्ट केसेस उसके बाद मेन कंटेंट फिक्स कर Most of the companies basically focused on like your degree, right? How But can that's the thing ना तो मैं माइंडसेट ऐसा रखो ना कि you are very good at what you do तुम इतने अच्छे हो that you don't need the degree कंपनी तुम्हारे पास आएगी have that kind of a mindset just think about the scenario so you are a tech founder you find a person who is like very good at what they do so obviously you would want to hire the right people you know digital करता है वो एक्टिव फेस्ट उसका जो बैक एंड हैंडल करता है वो 17 साल का है बैंक नाउ yeah layoffs but it's like I realize there are more jobs less people it's just that there are not enough qualified people so I think people who work in tech are very privileged people don't realize it you are really lucky I have had friends and people who are like dentists and lawyers अगर काम पे मतलब मैं तो काम करते हैं लंदन में इंडिया में भी लॉयर्स यहाँ पे बहुत अच्छा काम अपने आप में some people they're lawyers I was working in ML and I was like मैं already कर रहा हूँ तो मेरे से नहीं हो पाएगा टाइम नहीं पाऊंगा तो Mark who is the CEO he reached out to me कोई बात नहीं तुम हाफ टाइम कर दो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वगैरह डोंट वरी अबाउट इट मैंने ठीक है I joined एक महीने बाद I quit the village I joined CEO था थर्ड ईयर में शुरू then मैं तब से उसी में that's the first question it's not all nice and everything First time exposure. exposure तो फिर तेरे पे चल जाना मैंने चलेगा but the real it's like I've been everywhere I realized कि मतलब it's a very personal thing and most people को नहीं अच्छा लगता बाहर just they feel like they miss home घर की आदतें वगैरह खाना भी खुद बनाओ फिर you know that's why I travel a lot India back to रहता I mean London भी जैसे मजे के लिए but like and also like I get to work with the team very closely also doing easy but travel सामने रहता है वहाँ से for आना जाना but then think about it मतलब करना तो संभाल But I would say you inspired me. That's why I'm here. You inspired me. I see you every day that you are there, you do things. So I would also like to try. to develop get to travel but again that's the thing it's like when you know गाँव में से cleaner on the other side मुझे लगता है कि is just like traveling all the time but now I'm like it's more out of it I don't like doing it anymore 2024 I like traveling less मतलब मेरे लिए less it will still be more but I don't like traveling there's things why you want to do it but if you want to get a role outside India I just say big tech companies होते हैं apply to their job portals via referral Google वगैरह that's one and then do the interviews and everything second is startups that you have to have very good profiles That's one like partially yes, not they may have some failure case or maybe they might not help you with large amount of database or large amount of data that are working with them. And then sandbox projects are the projects that may have some security issues if you are using them, but they are not tested. Let's say work by directions they are maybe not tested for production. So these are broader perspective of projects. Just example, you know about Captain, okay, and you have written 2 to 3 blogs on Captain. You have made a video on Captain. You are speaking about Captain in different events. Like I just contributed to Captain, and he has spoke to KubeCon China about Captain itself. So it is also a good way of advocacy. Yes. Came up with this idea that what if we were able to run C++ code directly in the browser. So they were first looking at assembly code, an assembly script, one of you mentioned assembly script.
as ways to basically run these particular pieces of code logic inside of the browser, but they did not really find a good way. But ultimately, what we kind of came up with was this concept of a code like, let's say, C++ or Java. किसको है प्रोसेस सिंड्रोम? जिसको नहीं पता उसने हाथ क्यों उठाया? कोई बात नहीं. So we'll talk about this topic. मैं थोड़ा mindset change करने की try करूँगा. Why imposter syndrome is not a bad thing. It's fine, अच्छी चीज़ है. And about me, I'm Kunal, work at CEO, which is a cloud native service provider. So if you have, if you end up with a job वगैरह में जाओगे, you'll be working in imposter. Who gets it? So everyone gets it. It's not like students को भी होता है. Tom Hanks वगैरह सीखा, ठीक है, उसके बाद और सीखा, उसके बाद रेसिंग वगैरह सीखा, थोड़ा और देख लिया कि ब्राउज़र में कैसे काम कर रहा है. उसके बाद और डिटेल में चले गए, हर चीज़ मतलब माइन्यूट सी पूरा मशीन लेवल तक चले गए कि कैसे चल रहा है, ये क्या चल रहा है. प्रॉब्लम है इसके टाइम कम हुआ है, इतना डिटेल में जाने का फायदा नहीं है. People try to be an expert, they face imposter syndrome क्योंकि 6-7 महीने निकल जाते हैं, तुम सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हो, लेकिन आउटकम कुछ नहीं आता. ना कुछ प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट किया, ना कोई प्रोजेक्ट बनाया, ना ओपन सोर्स किया, ना हैकेथन में गए. क्यों? क्योंकि तुम ट्राई कर रहे हो कि मेरे को सब सीखना है वेब डेवलपमेंट में या कुबरनेटिस में. इससे फिर लोग भी मोटिवेटेड हो जाते हैं. 4 सेमेस्टर निकल गए, हमारा कुछ हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम 2 साल से पढ़ रहे हो बस. Don't do that. Are people born smart? Maybe sometimes कुछ होता है, कुछ लोग मतलब बहुत ही रेयर जेनेटिक्स, ब्रेन में कैलकुलेशन वाला पार्ट बड़ा होता है. But I don't think people are born smart. I think it's all about finding your passion and enjoying what you do. Expert. So expert लोग कौन से होते हैं? Those people who strive to please others. ठीक है कि हम expert बनना है for others and not yourself. These are the kind of people who face imposter syndrome. जिनके लिए कुछ भी इनफ नहीं होता. It's not just enough. और एक और तरह का पर्सन होता है जो imposter syndrome फेस करता है, सोलो ट्रेन. Because they believe that asking for help is a sign of weakness. सब कुछ अकेले करना है. मतलब कोई डाउट आया नहीं पूछेंगे, खुद सर्च करेंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, है ना. अपने नया प्रोजेक्ट है, अकेले काम करना है, नो टीममेट्स, नथिंग. ऐसे लोगों को भी imposter syndrome होता है. एक होता है सुपर पर्सन. सुपर पर्सन क्या होता है कि मैं सब कर लूँगा, मुझे सब दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये काम कौन करेगा, मैं करूँगा. ये सब कौन करेगा, मैं करूँगा. तो इवन तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो लाइक मैं सब कर लूँगा, मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो. ऐसे लोगों को भी imposter syndrome होता है. So do you face imposter syndrome? ठीक है, if you do it, 50% of the time worrying कि आगे इंटरव्यू में क्या होगा. या नहीं इंटरव्यू, he is worrying. And John Wick, who is a man of sheer focus, commitment and will, वो 100% टाइम देता है प्रिपेयर करने में. दोनों का अगर मेंटल इंटेलेक्चुअल सेम है तो वो विल बी बेटर. जॉन विक, है ना. So don't worry about things that are not in your control. Just do your actions and at the best go, and things that are not in your control. Right? And then they implement a lot of it. I think when the team is small and you get to work more closely, having said that, like तुम लोग students हो, इसका मतलब ये नहीं है कि you will not apply to big tech. ऐसा बिल्कुल नहीं है. I always recommend do it. Apply to big tech, but because it looks good on your resume, obviously. Like you can learn whatever you want, and the pros and cons are इसके होते हैं. But if you have that fang in your resume, आगे जाके it's a good choice. It's fine. कुछ security, stability, थोड़ा बहुत, but एवरीवन वेलकम. फाइनली वी मीट कुणाल भैया, जो मैं बहुत टाइम से एक्सप्लोर कर रहा हूँ. इनसे बहुत चीज़ मैंने सीखा भैया से. तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन माय चैनल, और बोल दीजिए कि थोड़ा सब्सक्राइब. You can subscribe and you can also start YouTube channel. मैं बोलता हूँ कि learn in public and personal branding वगैरह या जो भी है काफ़ी वेज में कर सकते हो. जैसे ब्लॉगिंग होती गई, YouTube हो गया, कंटेंट हो गया, यूज कॉन्फ्रेंस में टॉक दे दी, ट्विटर पे बना लिया. So he's doing YouTube because I think
you should support that. But you also take inspiration from him. जैसे उसने start किया है, you can also start and support each other. But yeah, to make sure that you should like, share, subscribe, and hopefully you also have a responsibility. You know, if you're a content creator, and people are following you, so you have a responsibility to put out nice content. और भी एक रिक्वेस्ट है, जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं तो अप्रोक्स 45 400 लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि बैचलर जावा कोर्स है, तो मैंने आपका रिकमेंड किया। तो उन्होंने क्या कहा कि हिंदी में प्लीज भैया को बोलिए, हिंदी में ट्यूटोरियल। I don't have time, but I would say कि एक बंदे पे डिपेंड मत रहो, it's very dangerous thing. हिंदी पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, but I think इंग्लिश भी ठीक करो अपनी, it will be better. But yeah, I think good luck and काफ़ी रिसोर्सेज हैं, just support each other and subscribe to